शकुंतला मैम को, सुरेंद्र जी को और वंदना मैम को प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आपको भी प्रणाम सर। ऑफलाइन ऑनलाइन का सर मैडम ये समस्या है कि हम एक दूसरे के चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। नमस्कार मैम। Thank you for coming and thank you for sparing your very valuable time and being there. It's indeed always a pleasure meeting you. Thank you मैम। तो हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में आज के हमारे बड़े ही सम्माननीय अतिथि वक्ता प्रोफेसर आशीष दहिया जी का, जो कि डायरेक्टर हैं Institute of Hotel and Tourism Management at MD University, as well as the director of the Life Skills Center Development Center at MD University, and the only professor in the field of hotel management of our country. So it's indeed a very we extend a very warm welcome to you, sir, and a pleasure to see you online. Hopefully, we shall be meeting offline sometime. It's quite long, the offline mode. And, a very pleasing personality, a very dynamic person, a very workaholic person, and a person with the innovative thoughts, and a passion towards the teaching, research, and his own field of hotel and tourism management. I think in this field, as far as the passion is concerned, and that too in the teaching, I think he is one of those persons who has contributed tremendously towards this. And I would also say that he is an institution builder. इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस IHTM को ग्रो किया है, और जिस तरह से इन्होंने उसको बहुत ऊंचे लेवल तक ये लेकर गए, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, because he has been associated with that department right from the beginning. And और किसी भी शुरुआती दौर के अंदर चीजों को ऊपर लेकर जाना, उसको बहुत कम समय में इस तरह की उपलब्धियां दिलवाना, ये वाकई एक लीडर का काम होता है। आशीष जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और बड़ी ही खुशी है हमें कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आज का भी टॉपिक बड़ा ही यूनिक है, और मेरे को ऐसा लगता है आशीष सर के बड़े दिल के करीब है, जिसके ऊपर हम शायद बहुत टाइम से चर्चा कर रहे थे कि इस सेशन के ऊपर हम बात करेंगे या इस सेशन को हम करेंगे, है ना। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और रामदार जी को बुलाते हैं आपके एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए। Yes, madam. Shall I start, madam? Yes, please. Good morning to all of you. It is my pride and privilege to introduce Professor Dr. Aziz Dahiya, Director, Institute of Hotel and Tourism Management, Director, Center for Life Skills and Soft Skills, MD University, Rohtak, Haryana. Sir has an experienced professor and a renowned speaker for hospitality and tourism management with a demonstrated history of working in the university administration and industry. Established hotel and tourism management in various universities in India and abroad, skilled in hospitality operation and management, food of India, hygiene and housekeeping. Strong academic professional with an attitude for research. He has completed FDP from IIM Kozhikode and Executive Education Program from IIM Ahmedabad. Over 20 years of experience, Dr. Aziz comes with an hands-on expertise across hospitality and tourism industry as well as education. An immense specialist, he has been in opening of leading luxury hotels. He has established several university teaching departments of hospitality and tourism in India and UAE. With years of experience in education, Dr. Aziz specializes in developing high-performance culture and a result-oriented work environment. Dr. Aziz is a professional who leads a team with an example. He focuses on the quality performance of all elements. His key academic and administrative with a proven track record assignments includes
established Department of Hotel Management at PIT Mr. Ranji as founder member and launched India's first university journal of hospitality application and research as founder editor, received appreciation from the then Vice Chancellor. Established School of Hotel Management, Uttarakhand Open University as advisor and received appreciation from the then Vice Chancellor. Strengthened Center for Mountain Tourism and Hospitality Studies, HNB, Parwal University, Uttarakhand. Strengthened Institute of Hotel and Tourism Management, MD University, Rohtak, as a director of University Institute. ISTM was rated as one among the top hotel halls in India by various agencies during his term, offering bachelor's to PhD program in STU. Dr. Aziz has been awarded the Person Teaching Awards, Gem of Hospitality Award. Established Department of Tourism and Hotel Management at the Central University of Haryana as founder professor and head and dean. Presently, he is a professor and a director at the Institute of Hotel and Tourism Management and founder director, Center for Life Skills and Soft Skills, MD, University, Rohtak, Haryana. With this, I welcome you, sir, to deliver your lecture. Thank you. Thank you so much. Thank you, Madam Dr. Shefali Nagpal, for having me roped into this interesting session. So I'll try taking you to the food business, since the domain on which this program is scheduled is particularly emphasizing on business management lessons and practices from India. As a professor of hospitality and tourism, I would like to connect these dots in context of food and hospitality. At the outset, I welcome you to my session in this national level 2 weeks online refresher course on adopting Indian management systems for future business models. Well, I think it would be more apt to say, or rather raise a question, that how I fit into business management and Indian knowledge system. I think there is a very interesting quote, भूखे भजन ना हुए गोपाला. तो जब तक पेट में अन्न नहीं है तो भूखे पेट तो शायद भजन भी नहीं हो पाएंगे. और जब हम बात बिजनेस की करें और उसमें इंडियन नॉलेज मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात करें, उसको एक सिस्टम में वेंचर करने की बात करें, तो हमारे परिवेश में बहुत कुछ सीखने को है. तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, और मेरे चटोरों कैसे हैं आप? So all those who are happy, type H into the chat box. All those who are hungry, type chat into the H into the chat box. Let's see, all those who are happy and hungry, type HH into the chat box. So how many H do we get into the chat box? I am delighted to see Bajrang ji, Benisha ji, Bhupendra ji, Dr. Manjeet Kumari, Dr. Pratibha, Dr. Rekha, Dr. Vandana, Dr. Yogesh, Durgesh ji, Garima Shauran ji, Kuldeep Sharma ji. Lovely getting H from Surendra ji, Shakuntala ji, Pushpanjali ji, Garima ji, Seema ji, Mangal Singla ji, Dr. Pratibha ji. Wonderful. Do you know that when we talk about food, or when we go to a restaurant to dine in or have food, or even at our homes, or maybe after this session when you have your lunch time, we often get compliments or complaints about the food. खाने में ये अच्छा नहीं है, मजा नहीं आया, जायका नहीं आया. हमारे कई सिख और मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं कि जनाब मुर्गे की जान चली गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया. तो खाना आनंद के लिए होना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए कि बनाने वाले को भी मजा आए और खाने वाले को भी मजा आए. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं
सबसे पहले तो क्योंकि ये विश्वविद्यालय हरियाणा में स्थित है, बात करते हैं कुछ संजीदा उदाहरणों से जो कि महाभारत के समय से है। शीघ्र ही सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है वो लगने वाला है फरीदाबाद में, और हरियाणा को महाभारत सर्किट में, कुरुक्षेत्र को महाभारता के एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में दोनों ही राज्य एवं केंद्र सरकार प्रमोट करने के लिए प्रयासरत है। तो क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत हुई, किचन पॉलिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सोर्सेज की भी अगर बात करूं, आई एम श्योर you must have come across an author by the name of Devdutt Patnaik. He writes a lot about mythology and talks about mythology in connect to everyday practices. So today I'm going to begin this session with some of his discussions on kitchen politics. If it is of interest to you, type I into the chat box. If you are not interested for kitchen politics, be open to type N into the chat box. I would be happy to change the context. Well, Dr. Vandana ji, Jha Saab, Pushpanjali ji, Dr. Rekha ji, Durgesh ji, Surendra ji, Seema ji. Believe me, friends, this would be a very interactive session and I would not keep you bored, but rather keep it lively with a lot of fascinating examples from everyday life. Now, do you know that in the Mahabharata, when Krishna went to negotiate peace on behalf of Pandavas with the Kauravas, he refused to eat in the house of Duryodhana. Instead, he chose to eat in the house of Vidur. अगर आप ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में गंगा की आरती कभी अटेंड करें, and if you get an opportunity to listen to that aarti, there is a very interesting connotation that comes in between. सबसे ऊंची जग में प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुरगर खाई. And that's what even Devdutt Patnaik talks about, that he refused to eat the food in the house of Duryodhana, and Krishna chose to eat in the house of Vidura, who was half brother and advisor to Duryodhan's father Dhritarashtra. And what did Vidur serve to him? Green vegetables known since as Vidur Saag. So एक और इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल के आई कि आज जो हम रेस्टोरेंट में साग खाते हैं या घर में साग खाते हैं, साग शब्द महाभारत काल में भी प्रचलन में था. Isn't it interesting? And Vidur too had refused to eat food grown in the gardens and fields of Kauravas. What he did, he maintained his autonomy and reflected it by growing green leafy vegetables in his garden. So, food is not just about taste and nutrition. It is also a big way of giving a message. And thus, food is a very political tool too. You will see that even in today's context, when we talk about international relations, when we talk about foreign diplomacy, there is a term called as dinner diplomacy that is being used. And when the prime minister or the president of a nation visits India or vice versa, there are specifically curated menus over which a lot of interesting decisions and discussions are taken. Now, let's go with another interesting aspect of food, that since we are talking about Mahabharata, we also take an example from Ramayana. In Ramayana, while searching for Sita, who had been abducted by the demon king Ravana,
Ram encounters a tribal lady. Can somebody tell what was the name of the lady into the chat box? I'll put it into the chat box as a message for you. Ram jab and उनको वन में एक लेडी मिली थी. दुर्गेश जी is first one to answer Shabri, right? Well, Basant Jha Sahab has raised a question that it is not mythology, it is our itihas, isn't it? What would you say? Well, though depicting between mythology and history is not my domain, but since you have raised this question, I would like to answer it gracefully. That if you talk to a historian from any part of world, India, Asia, Europe, or America, they will not agree that mythology is history. So there is a difference from a historian's perspective that mythology is not history. It might be having evidences that yes, it existed. So with that rational answer, I'll come back to my point, which I was discussing. So Durgeshji appreciated, we were talking about Shabri. So in the Ramayana, while searching for Sita, who had been abducted by the demon king Ravana, Ram encounters a tribal lady called Shabri, who feeds Ram berries. Ber khilai the na Shabri ne. She takes a bite of each fruit before offering to Ram. Lakshman sees this as an insult and wishes to admonish Shabri. But Ram tells him to check the reason for this action before jumping to a conclusion. Shabri says, I want to ensure that what I serve is the sweetest of berries to Ram. So I need to check each one before serving. Beneath her perceived uncountenance, there was a pure love, and that's what Ram was looking at. Again, when we talk about food, in Ramayana, Ravan's brother, Kumbhakarna, is described as a man who sleeps all the time, and when he wakes up, he must be fed with vast quantities of food, making him a sloth and a glutton. He who eats a lot of food is not worthy of respect. Perhaps that's why the images of Kumbhakarna are set all flames during the festival of Dashera, apart from the other reasons which you know very well, that why Rama puts on fire Ravana, Kumbhakarna, and Meghnath on the festival of Dashera. I'm just connecting the dots in connect to food. I'll take another example. Ganesha, the elephant-headed son of Shiva, is described as a glutton. But the reason here is very, very different. Once Kuber, king of Yakshas, wondered how Shiva, the ascetic, could feed his corpulent son. Let me feed you, said Kubera, as clearly your father cannot afford to do so. Ganesha accepted Kubera's invitation. He went to his house and ate all that was offered. I'm still hungry, said the elephant-headed god. Kuber had to procure more food using the money in his treasury. Ganesha ate all that was served and kept asking for more. Finally, Kuber fell at his feet and begged him to stop eating. You are draining me dry, he cited. Ganesha then said with a smile, any attempt to satisfy hunger will never be successful. My father Shiva therefore seeks to outgrow it. Now, there are so many interesting lessons in connect to food from mythology, history,
and Indian knowledge system. We will continue with these discussions and will talk a very fascinating journey of India's culinary heritage. And then, as faculty members, learners of business management, you may think about that how, in which way they can be utilized into Indian management system and business models. Well, if you are enjoying this discussion, type E into the chat box. If you're getting bored with this discussion, type B into the chat box. Let's see how many E's and B's do we get. Dr. Manjeet, Dr. Vandana, Jhasab, Dr. Rekha, Pushpanjali ji. Lovely. So the people who are not responding with E and B, they are missing. Well, Ramraj ji, Durgesh ji, Shakuntala ji, fantastic, super. Do you know that when we talk about India's culinary heritage, now I'm coming to certain interesting facets of history. And when we talk about India's culinary heritage, I will be talking that how and what India has offered to the world. Well, friends, there are so many things which India has offered to the world. I hope my slide is visible to you on the screen. Type V if the slide is visible to you on Yes, the sir, it is visible. Fantastic. So, we'll be talking about India's culinary heritage. India has a rich and varied culinary traditions. Now, they differ from region to region, north to south, east to west, and central India. And interestingly, there is no Indian food as such, nor it has always hot, or there is no such dish which is curry that means sauce or gravy. I'll raise certain questions. Do you know that in Indus Valley civilization, what was or what were the popular sources of entertainment by the people? Let's see how many of you are able to reconnect from your school social sciences that what were the popular means of entertainment or recreation in the Indus Valley civilization. Type your answers into the chat box. I think, yes, you are thinking on a right tone. When we talk about Indus Valley civilization, there were toys which were made up of clay. Cockfighting was one of the ways for entertainment and recreation. Type A if you agree to it. Now, that leads to a question that if there were grain houses in the Indus Valley civilization, that means the cultivation of crops had taken at that point of time. That also means that if cockfighting was being done and it was a means of recreation, so that fowl was domesticated by that time. Now, do you know, interestingly, friends, that when the fowl was domesticated, so what did they used to do? If cockfighting was a mean of entertainment, fowl was domesticated. If India has preached the lessons of vegetarianism as a land of Buddha and Mahavira, as a land of King Ashoka, India also has the credit of bringing chicken to the platter of the world because Indus Valley civilization depicts that the domestication of fowl had taken place at the time. And as a researcher, as an academician, if you think rationally, then what did they used to do with the fowl? So the obvious answer is that cockfighting was meant for entertainment, but eggs and chicken were used for the consumption. Interestingly, that coins another question. When did cheese came to India?
You must have eaten paneer at your home. मटर पनीर, पनीर पसंदा, पनीर बटर मसाला. आप मुझे बोलेंगे तो मैं 50 डिशेस गिनवा दूंगा. आखिर मैं लाइसेंस्ड चटोरा हूं इस प्रोफेशन का. आई एम द प्रोफेसर ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. Interestingly, now your civilization has a great role in your food habits. When Britishers came to India, the cheese was promoted. So is it that Britishers taught us the art of preparing cheese? The answer is not exactly. Food is associated with different aspects of life. Food has a role before birth till post death rituals. You would notice that in Indian culture, much before one thinks of planning a child, right at the stage of inception, there are logical reasons what types of foods to be eaten, why and why not. When a child is born, the kind of food to be offered. When the sanskaras, sola sanskaras of a human takes place, each sanskar has association of food. When somebody completes his or her life journey, food has a pivotal role, and this is a universal law, I would say. Because if you talk even about ancient civilization of Egypt, so even near to the mummies, along with the jewelry and other food items were being placed. Well, let me come back to the point which I was talking. In Indus Valley civilization, cows, milk, ghee were treated as pious. I'll not go much far, but I'll take you to the realistic world. Many of you might not have been the students of history, but you must have seen your grandmothers or great grandmothers. When I was a child, I remember an incident. I belong to district Sonipat in a village about 8 kilometers away from district headquarters. I was a child and must have been of an age group of 4 to 6. We used to have cows and buffaloes at our home in the village. One fine day, the milk fell down on the floor, and I saw my grandmother. She was so upset and she licked the milk with her tongue. As an inquisitive child, I raised a question. Why you did so? She said, Retanyana bera devta bura man jange. Milk has been considered as a very pious liquid in Hinduism. And to that extent that even now, if you talk about per capita consumption of milk, Haryana would be amongst the leading states in India जहां पर आज भी मां बच्चे को बिना दूध पिए सोने नहीं देती. पंचगव्य और आपकी मिल्क के जो यूटिलाइजेशन है हवन से शुरू हो जाती है और दिन भर चलती है. पंचामृत भी आप मिल्क से बनाते. इंटरेस्टिंगली, वह सभ्यता जहां पर दूध को इतना पायस माना गया है कि आज से ज्यादा दूर नहीं, मैं सिर्फ 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि ग्रामीण परिवेश में अगर दूध नीचे गिर जाता तो उस समय में ग्राम की, आपके घर की मुखिया, आपकी दादी या आपकी बुआ या आपकी नानी उसको इतना पवित्र मानती थी कि वो उसको जीवा से चाट लेती थी. इंटरेस्टिंगली, उस सभ्यता में कोई दूध को फाड़ने की सोच भी नहीं सकता था. इसलिए हिंदुस्तान में पनीर का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया. जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए तो वो अपने साथ पनीर बनाने की कला लेकर. Well, let's come back from the fascination of Indus Valley civilization and put a little pressure on our mind. Let's apply our mind. We have been eating food every day, right? Which must have been the first cooked human food
Let me see who answers it first. Let's see into the chat box. हेलो सर, आवाज गायब है। नहीं आवाज आई नहीं रही सर। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। Well, interestingly, there was a question that was raised. The question was, what do you think must have been the first cooked meal when the man started cooking or cultivating food? Pushpanjali ji has written a very interesting answer. Rice, yes, it can be. Since we are here in Haryana, in the land of rotis, here comes another interesting answer also. The answer is gruel. Jha fruits were not the cooked meal, fruits were eaten raw. Gruel means dalia. गेहूं को दला जाता था या बाजरे को दला जाता था और उसको पकाकर खाया जाता था। चक्की का इजाद बाद में हुआ। Type A if you agree to it. Type E if you are enjoying this session. And now we move on to the presentation which we were talking about. Good, Jha Saab. Lovely receiving your messages, Durgesh ji. You are a wonderful audience. Well, I'm sure that the slideshow is visible to you, and we move on to the presentation. Interestingly, that even Vedic literature informs that there were barley and wheat, which were the main elements of food which were ritually consumed by early Aryans. And as agrarian economy grew, cattle and other domesticated animals became more useful in agrarian activities. This was the beginning of vegetarianism. As I told you, that India has been a land who preached vegetarianism to the world. This practice grew with the rise of Buddhism and Jainism in the 6th century BC. The food consisted of various grains, fruits, vegetables, and milk product. Due to the warm climate and cultivation of large number of herbs and spices, the preparations became more and more elaborate. बात हर्ब्स और स्पाइसेस की हो रही है दोस्तों, और बात 6ठी शताब्दी बीसी की है। थोड़ा सा आगे चलाता हूं, आज की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपको मालूम
अगर हिंदुस्तान अपनी रिवायतें या अपना नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यू करता, we would have been a fascinating country. Though we are blessed to be in our motherland, India, but all of you must have eaten red chilies at your home. Type C if you have eaten chilies at your home. लाल मिर्च तो खाई है ना सबने, झा साहब, सुरेंद्र कुमार जी, पुष्पांजलि जी, गुड, रामराज जी, रेखा जी. But did you ever notice whenever you talk to some Ayurveda charya, the first thing which he does, he says in his prescriptions, Lal Mirch Nishedh, avoid red chilies. Well, झा साहब ने यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा है, तामसिक. उस पे हम बाद में बात करेंगे, राजसिक, तामसिक और सात्विक खाने क्या होते हैं. लेकिन लाल मिर्च का तामसिक से कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि जब राजसिक, तामसिक और सात्विक नॉमेनक्लेचर दिए गए, तब हिंदुस्तान में लाल मिर्च थी ही नहीं. आयुर्वेदाचार्य जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लाल मिर्च निषेध इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उनमें लाल मिर्च का जिक्र नहीं है. सब जब हम इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि लाल मिर्च का जिक्र क्यों नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च जब वेद लिखे गए हिंदुस्तान में थी ही नहीं. लाल मिर्च हिंदुस्तान में आई करीब 450 साल पहले. कब? जब पुर्तगाली हिंदुस्तान आए. When Portuguese came to India, they got red chilies with them. रेड चिलीज का इजाद बोल्विया का माना गया है, और पुर्तगाली जब आए तो लाल मिर्च अपने साथ लेके आए, और उससे पहले हिंदुस्तान में लाल मिर्च प्रयोग नहीं होती थी. तो मेरे चटोरों, सवाल आता है that if red chilies were not available in India before 450 years, then what was that was used to add pungency into the food? What was that was used in place of red chilies in Indian food? You can answer into the chat box. I would like to answer here. Well, पुष्पांजलि जी, फैंटास्टिक. ब्लैक पेपर, काली मिर्च. अगर काली मिर्च हिंदुस्तान में ना होती, समूचा मालाबार, केरल, तमिलनाडु, एडजॉइनिंग मालाबार स्पाइसेस के लिए एक बेहतरीन जगह है. और एक जमाने में ज्यादातर स्पाइसेस जिसमें ब्लैक पेपर बहुत पॉपुलर रही, एक्सपोर्ट होती रही. आज भी बहुत सारी स्पाइसेस हमारी एक्सपोर्ट होती हैं. आज जो समूचा यूरोप कॉन्टिनेंटल फूड के नाम पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर का यूज करता है, किसी जमाने में हिंदुस्तान में बाखूबी प्रयोग होती थी. ग्रेजुअली हम उन चीजों को छोड़ते गए, हम उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या सोसाइटी एट लार्ज में प्रमोट नहीं कर पाए, और बाकी का विश्व उससे लाभान्वित होता रहा. है ना कितनी सारी रोचक बातें. अब बात आती है कि अक्सर हम कह देते हैं, बच्चे घर में कहते हैं, खाने में मिर्च बहुत है या खाना स्वादिष्ट नहीं है. इंटरेस्टिंगली, मिर्च बहुत है से क्या तात्पर्य है? When we say how many marks you have got, or when I was going through the session, I could saw there was a link in between, and in the link there was a link for attendance, that if you have 80% of attendance in this session, in this entire program, you will be awarded with a certificate. There is a way to assess or measure, right? So how do you measure the spiciness of a chili? How do we measure कि एक मिर्च कितनी तीखी है? The answer is Scoville scale. Scoville scale पर हम मेजर करते हैं कि एक मिर्ची कितनी तीखी है. वेल, बॉलीवुड में गाने तो बहुत बने हैं मिर्ची पे. उफ उफ मिर्ची, आय हाय मिर्ची पे अनिल कपूर ने बहुत डांस किया था. एक जमाने में बहुत पॉपुलर गाना भी था. इंटरेस्टिंगली, जब हम फूड के
टेस्ट की बात करें और हम ये कहें दैट फूड इज टेस्टी और फूड इज नॉट टेस्टी, how many amongst us would be in a position to answer that how many types of tastes are there in food? Let us see who answers it first. How many types of tastes are there in food? Well, झा साहब कहते हैं 7 और 8. ओके, चलिए झा साहब आप मंजिल के करीब हैं. रामराज नादर साहब कहते हैं 6. तो आपकी बात से मैं सहमत हूं. There are 6 tastes in food. आयुर्वेद कहता है कि भोजन में 6 रस हैं और आयुर्वेद यह भी कहता है कि 6 रस 6 ऋतुओं के अनुरूप होने चाहिए. सो ऋतु अनुरूप भोजन हमें करना चाहिए. सो दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट्स हैं, कौन कौन से रस हैं जो भोजन में हैं. स्वीट, salty, bitter, pungent, astringent. एग्जाम्पल्स आप ढूंढते रहेंगे साथ साथ, राइट? स्वीट, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड सॉर. चेक कर लीजिए कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई. अब इन रसों को आप ऋतु के अनुरूप इस्तेमाल करते हैं. एस्ट्रिंजेंट, अनार आपने खाया ही होगा. अब आप एस्ट्रिंजेंट रस को अनार से कोरिलेट कर सकते हैं. पंजेंट, आपने हींग या मिर्ची खाई है. बिटर, करेला. सार, नींबू. सॉल्टी और स्वीट के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा वर्ल्ड में एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं उमामी. उमामी इन सभी का कॉम्बिनेशन है. अगर आप इसको इंडियन कंटेक्स्ट में जानना चाहें तो एग्जैक्टली उमामी तो मैं उसे नहीं कहूंगा, लेकिन उमामी के करीब जरूर कहूंगा. वो है आपका गोलगप्पा, जो बाहर से कठोर है, अंदर से पानी से भरा हुआ है और ऊपर के सभी 6 रसों का समावेश अपने अंदर करता है. जब आप उसे काटते हैं तो एक क्रंची साउंड आती है, कुरकुरापन आता है, उसके बाद पानी आता है और 6 अलग अलग रस आपके मुख की टेस्ट बड्स को अपनी ओर खींच लेते हैं, टेंटलाइज कर देते हैं. तो मजा आ रहा है ना मेरे चटोरों? अगर मजा आया तो एम टाइप कीजिए, बोर हो गए तो पी टाइप कीजिए, राइट? झा साहब कहते हैं बस भूख लग रही है. झा साहब इत्मीनान रखिए, सभी टेस्ट बड्स जगा दूंगा. आज के खाने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. यू वुड थैंक डॉक्टर शेफाली एनफ टू रोप मी इन फॉर दिस सेशन. इंटरेस्टिंग. आशीष जी, यस मैम. अगर इफ यू आर मूविंग योर स्लाइड्स तो ये स्क्रॉल नहीं हो. No, I am not moving my slides. I am Okay. in between of Fine. discussions and then jumping back to the slides. ठीक है, फाइन. So, झा साहब कहते हैं हम तो क्रिएटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं. That's awesome, झा साहब. Okay, so तो ये तो हुई चटपटी जायकेदार बातें और वापस से चलते हैं अब स्लाइड्स के ऊपर. अब आयुर्वेद हमें ये भी बताता है कि खाना कितना खाना चाहिए. There are rules for eating. Now, what food should be eaten and why? Ayurveda says you should eat warm food because it stimulates Agni, digests quickly, carminates flatus and reduces mucus. So, अगर आपको कफ की शिकायत है तो आप गर्म भोजन खाएं. Ayurveda also says that you should have uncontours food. It tastes good, simulates the unstimulated Agni, digests quickly. It also produces clarity in the complexion. Interestingly, Ayurveda mentions that you must eat food in the proper quantity. So, if you eat food in the proper quantity, you will be able to have a healthy
and a happy life. You will be able to digest the food without discomfort. आपको जितनी भूख लगे उस भूख के अनुरूप आपको 70 to 80% खाना खा लेना चाहिए। 20 to 30% स्पेस आपको अपने स्टमक में, अपने टमी में रख लेना चाहिए ताकि उसका डाइजेशन ठीक से हो सके। और अगला भोजन कब करना चाहिए? When the previous meal is digested. Otherwise, it will lead to doshas. So, you will have health issues. So, once you eat a meal, eat it completely, leaving 80% of your tummy filled, 20% space available, and eat only after your previous meal is digested. Then eat in your favorable place with favorable accessories. Yes, my dear friends. If you eat with mental or emotional disturbance, if there are interruptions while eating, then the food will not be able to deliver the nourishment, the happiness, what it should have been. You should not eat too fast or too slow. If you are eating too fast, seems you are in depression. If you are eating too fast, you are putting the food unchewed properly into your stomach, asking your digestive juices, compelling them to work harder. If you are eating too slow, you won't get satisfaction and the food will be cold and would be leading to digestion issues. Do not eat food while talking, laughing or distracting. ऐसा नहीं है कि इनमें से ये बातें आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, बट अक्सर रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में हम इन्हें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि आशीष ने कहीं से सुना और आपको बता दिया। देखिए, डॉक्टर शेफाली एज डायरेक्टर अपना काम बखूबी करती हैं। ये कहती हैं कि जी सोर्स बताइए जो आपने कहा। 1/3 of the solid food, 1/3 of the liquid food, leaving 1/3 for the doshas and 1/3 for the empty space in stomach. ये सूत्र हैं आयुर्वेद में जो दिए हुए हैं। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 7, सूत्र नंबर 27 आप आयुर्वेद को रेफर कर सकते हैं। फिर यहां प्रश्न एक और उठता है दोस्तों, खाने को स्वादिष्ट क्या बनाता है? चलिए फिर वापस से चटपटी बातों पर आ जाते हैं और प्रेजेंटेशन को करते हैं साइड में। कौन बताएगा खाने को स्वादिष्ट क्या बनाता है? कुलदीप शर्मा जी लिखते हैं मसाले। वाह कुलदीप जी, दैट्स ऑसम, आई अप्रिशिएट। लेट्स सी व्हाट पुष्पांजलि सी सेज, व्हाट राजेश मौर्य सेज, व्हाट शकुंतला जी सेज। रेखा जी कहती हैं मन। मैं आपकी बात से भी सहमत हूं रेखा जी। मसाले तो भोजन को जायकेदार बनाते ही बनाते हैं। मन बनाने का भाव लिखती हैं डॉक्टर वंदना सिंह जी। खाने को बनाने का भाव भी अच्छा बनाता है। वेरी नाइस। तो खाना बनाते वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए। वेरी नाइस। राजेश जी कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए। मंगल जी कहते हैं सॉल्ट एंड शुगर, दैट इज वेरी गुड। मूड ऑफ कुलदीप जी कहते हैं ओके, गुड गुड। सर अगर देसी घी डल जाए तो और बढ़िया बन जाए। शकुंतला जी कहती है अगर देसी घी डल जाए तो कहने ही क्या है। तो दोस्तों, आप सभी की बातों को मानते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और यहां एक बात और कहना चाहता हूं। खाने को सबसे स्वादिष्ट मसाले, घी, चीनी, नमक, मूड ये तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इन सबसे भी स्वादिष्ट बनाती है भूख। अगर आपको भूख ही ना हो तो आप सत पकवान आगे रख दे, खाने वाले को उसमें स्वाद नहीं आएगा। टाइप ए इफ यू एग्री टू इट, राइट। सो इंटरेस्टिंगली भूख एक आम जनमानस का शब्द है। अगर आप इसको आयुर्वेद के कंटेक्स्ट में जोड़ें तो वापस हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। रामराज जी, मंजीत जी, सीमा जी, गरिमा जी, आपने जवाब दिया, इतने एक्टिव पार्टिसिपेंट है, आपका शुक्रिया। आयुर्वेद कहता है ईट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ अग्नि और डाइजेशन। वट एवर क्वांटिटी गेट्स डाइजेस्टेड इन टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मलेसी शुड बी रिगार्डेड एज प्रॉपर मेजर।
right? So it is the agni, it is your digestive system that makes food tasty. You will see that even people who are at senior point of their age or life, they are able to eat food and are able to digest it, क्योंकि उनकी अग्नि तीव्र है. When your agni is not good, then no matter what food is being served, you will not like it. So खाने को टेस्टी बनाती है भूख. आप भूखे हैं और सूखी रोटी भी नमक के साथ मिल गई तो क्या कहने. आपका पेट भरा हुआ है, 4 रसगुल्ले भी सामने रखे हो तो जनाब जायका नहीं आएगा. रेस्ट, apart from your bhook, rest all are the factors which indeed add value to the food. Now, heavy food eat only to 1/3 or 1/2 the point of saturation. Light food can be eaten up to the point of saturation. यानी कि जब आप देखें कि आप किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आपको लाइट फूड सर्व किया जा रहा है, जैसे कि दलिया, आप पाएंगे वहां कोट्स लिखी होती हैं, खाए मन भर व्यर्थ ना जाए कण भर. Right? So foods like porridge, gruel, khichdi, you can eat up to the point of saturation. But foods like halwa, foods like kheer should be eaten only 1/3 or half the point of saturation. Now, what is the point of saturation? It depends on the strength of Agni, right? So, if you have understood so far, type U into the chat box. Waiting for your answers. That if you have understood so far, type U into the chat box. Lovely getting you from Pushpanjali ji. फैंटास्टिक. झा साहब लिखते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार ही आहार नियोजन करना चाहिए. फैंटास्टिक. पुष्पांजलि जी, शकुंतला जी, वंदना सिंह जी, मंजीत कुमारी जी, परिजाद लिखते हैं माउथ वाटरिंग एंड इंटरेस्टिंग सेशन. सीमा गुप्ता जी, बजरंग जी, वाओ. तो मेरे अजीज, आप सबके कमेंट्स मिले मुझे बेहद लजीज. चलिए तो चलते हैं इसी डिस्कशन में आगे और बात करते हैं कि एकेडमिक कंटेक्स्ट में जब हम इंडियन कुकरी की बात करते हैं, क्या इसमें कुछ कोडिफाइड टेक्स्ट हैं. शायद हमें फॉर्मल एकेडमिक सिस्टम में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला. आज हम उन पे चर्चा करेंगे और आपको जब समय मिले तो आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं. दोस्तों, कुकरी ट्रेडिशंस में एक कुकरी ट्रेडिशन है सूप शास्त्रा का, जो 1508 में लिखा गया. फिर एक और है 1670 में, जो भोजन कुठवाला के ऊपर लिखा गया है 1670 में. और शिव तत्व रत्नकारा लिखा गया है 1700 ईडी में. और ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स फूड को लेकर बताते हैं. इसी तरह से मनसो उल्लासा में बहुत सारी बातें फूड को लेकर लिखी हुई हैं. अब चलते हैं एक एक इनके बारे में बातें करते हैं. सूप शास्त्रा क्या कहता है. 6 चैप्टर्स हैं जिसमें 358 वर्सेस लिखे हुए हैं कुकरी के. ये कहता है फूड इज फॉर नॉरिशिंग द बॉडी. पहला ही फंडामेंटल कंटेक्स्ट देखिए. Food is for nourishing the body, and if you add values to it, it is to nourish body and soul. But what actually do? We just tantalize our taste buds. So remember, when you are eating food, you should eat food, you should prepare food, you should serve food for nourishing the body and the soul, and not only to tantalize your taste buds. Food is for the bhoga. So there is nothing wrong with the food. हम कभी कहते हैं ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है. जो भोजन ही हो गया, भोगने के लिए ही हुआ, तो अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है. अच्छे और बुरे हैं आपके मन की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति. And there are 9 plant parts that are exclusive source for food.
Trees, shrubs, grass, creepers, tubers, stalk, leaf flower, fruits are all plant consumables. And there is an exclusive text for vegetarianism available on Supa Shastra. So when you get time during your free time, do have a glimpse of Mangarsa's Supa Shastra and have insights to definer details of culinary. Now, the first chapter, it talks about starchy foods, 9 types of rotis. We have for a long time confined only to wheat chapatis. No, we must consume different types of grains. Did you notice that even the government of India and the Prime Minister has declared this year as year of millets? They are talking about eating wholesome foods, right? There are 10 types of vataka like milk, curd, idlai, kudabu, dosa, etc. Preparation of suji. This also talks about preparation of sweets and different delicacies using starches in your food. Well, friends, then there is an interesting depiction in Pankadaya. Now, it talks about usage of dairy products like butter from milk, rasala, lassi, etc. Our ancient scriptures and text talks about different types of oils, their usage and applications. Fruit juices like jamun, am, aloe vera, rainwater and other types of waters, their consumption and benefits. Over the years, gradually, we have started forgetting our ancient practices. Use with wisdom, carefully, and adopt better practices for a healthy and happy life. I'm sure that in such a short span of time, we might not be able to give you the detailed insights to culinary traditions of India, culinary heritage of India, but at least would be in a position to sensitize you about the Indian culinary heritage. Type A if you agree to it. All right. So, for the time being, I am stopping sharing and again coming to the interesting discussion which we were doing. So, friends, we were talking about kitchen politics. We were talking about epics of Ramayana and Mahabharata. Now, let after talking about Ganesha, that how the elephant-headed son of Shiva had let down Kuber to touch his feet and say that you should bless me. Interestingly, both the stars of epics, Ramayana and Mahabharata, I'm talking about the ladies Sita and Draupadi. They are considered to be the great cooks. According to one North Indian retelling of Ramayana, there is a story, there is a narrative. A crow took a piece of bread cooked by Sita and dropped it in Lanka. Ravana ate it and was driven mad with the desire of the person who cooked that. This says this retelling is the real lesson for Ramayana connected with the food and Sita. There is another interesting retelling. Now, I am not talking about documented Ramayana or Mahabharata. I am talking about retelling, right? Now, another folk retelling tells us that how Kunti, the mother of Pandavas, never shared her kitchen secrets with daughter-in-law Draupadi. Through food, Kunti ensured her sons still came to her and were not actually smitten by their beautiful wife. But Draupadi was determined to wean her way into her husband's heart through their stomach. Now, do you remember that there is a very interesting quote? If you wish to wean your way into somebody's heart, the way is through the
stomach. Type A if you agree into the chat box. Yes. If you wish to wean her way into somebody's heart, the answer is through the stomach. Lovely, lovely, lovely. Wonderful. I'm happy to see such a participative audience in this interesting program. Wonderful. I have posted this quote into the chat box. Okay. So we come back to the discussion of kitchen politics, which we were talking about, and take these interesting discussions ahead. Now, what she did, Draupadi kept observing and smelling what Kunti served each of her husbands and figured out the recipe and ended up preparing the dishes, adding their own innovations. And Pandavas craved for. Then, of Draupadi's husband, Bhim was a glutton. When Kunti cooked rice, one half of the rice was given to Bhim and other half was divided equally between the other four Pandavas by their mother. It is over food that Bhim had a violent encounter with a demon called Baka. Baka was a glutton who would attack a village and kill and eat indiscriminately. So, to make peace, the village promised to send Baka each month a cart load of food with a young man or woman. Baka would eat not only the food but also the bullocks and the young man or woman who brought the food. This would satisfy him for a month until the arrival of the next cartload. Bhima offered to save one boy of the village by volunteering to take the cart of the food to Baka. His real reason was to eat the food himself. When Baka found Bhim eating the food meant for him, he was furious. A fight followed in which Bhima killed Baka. The good glutton trampled over the nasty glutton. And when Bhima died, he was not allowed to enter paradise of gods. He was condemned to hell for the crime of gluttony. Well, there are interesting discussions when we talk about food and food politics. It takes me back to one more interesting discussion. I'm sure that you have so many times, rather numerous times, heard about Mahabharata. Now let's see how many of you know about Mahabharata. Type Y as yes, that yes, I know about Mahabharata into the chat box. Dr. Vandana Singh, Pushpanjali ji, Shakuntala ji, Bajrang ji, fantastic, fantastic, fantastic. Surendra Kumar ji, wonderful, wonderful, wonderful. Now, in Mahabharata, there comes a very interesting narrative. Well, we can consider Mahabharata to be a kind of one of the world wars because there was hardly any state that did not participate in this war. I'm seeking your attention towards a very interesting topic, that is the management of food in the war of Mahabharata. Did we ever think about that how the food was managed in Mahabharata? I am putting it into the chat box. The management of food in Mahabharata. Let us see who amongst us can share that who managed the food for Mahabharata. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Wonderful, wonderful, wonderful. Well, all the kings of Aryavrat were seen standing either in favor of Kauravas or Pandavas. India was known as Aryavrat at that time. Sri Balram
and Rukmani were the only two people who did not participate in this war. Right? Correct me if I am mistaken. At least that's what all we know. But there was another state which, despite being a war zone, was free from war. Do you know which was that state who did not participate in war of Mahabharata except from Sri Balaram and Rukmani? Ladies and gentlemen, that was the kingdom of Udupi in the south. Now, what was Udupi kingdom doing at the time? When the king of Udupi reached Kurukshetra with his army, the Kauravas and Pandavas, they tried to reconcile him, asking him to join either Kauravas or Pandavas in the Dharam Yuddha. The kings of Udupi were extremely visionary. The king of Udupi asked Sri Krishna, "O Madhav, whoever seems to be eager for war on both sides, but what has anyone thought about how to manage the food of such a large army from both sides?" King of Udupi talked about food and raised this question. I have posted into the chat box. Well, that was an interesting point. On this, Sri Krishna said, "Maharaj, you have thought perfectly right. When you teased this, I thought you had no plans for this. If so, please specify." On this, the king of Udupi said, "O Vasudev, this is true. The war is happening amongst people. I do not think it is appropriate. I really do not wish to participate in this war. But this war can no longer be avoided. That is why I wish that with my entire army, I should make the arrangements of food for all the army present here." So the king of Udupi offered preparing food with his army to all the soldiers of Kauravas and Pandavas in Mahabharata. On this, Sri Krishna excluded and said, "Maharaj, your idea is very good. Lots of people will participate in this war, and it's a responsible king like you who will see the management of their food. Then we will be sure of that. Anyway, I know that it is not possible for anyone other than you and Bhim Sen to manage the food of this huge army as Sagar. Bhim Sen cannot escape this war, so I request you to take care of the food of both the army." Thus, the Maharaja of Udupi took over as a food partner of army. Isn't it interesting, ladies and gentlemen, that how Maharaja of Udupi took over the food? On the first day, he arranged the food for all the princesses. His skill was such that not even a single grain wasted by the end of the day. As the days passed, the number of marts also decreased. The monasteries on both sides were surprised to see that by the end of every day, the king of Udupi made only the food for as many people who were actually present. No one was able to understand how they came to know how much physical death would be achieved today so that they could arrange food on that basis. Managing the food for such a huge army was a surprise in itself, and in such a way that even a grain of food was not wasted. It was nothing short of a miracle. Finally, the war ended and the Pandavas win. At the time of his coronation, Yudhishthira did not last and took himself to the king of Udupi. "Hey chef,
The kings of all the countries are praising us how, despite being a lesser army, we have enshrined the army which was being led by the nobles like Pitama Bhishma, Guru Dron, and our Jayanti Bharti Karna. But I think we deserve much more praise from all of us. We not only managed the food for such a huge army, but also managed that even a single grain is not wasted. I want to know the secret of this. Well, the king of Udupi laughed and said, Emperor, you need to credit for the victory in this war. The king of Udupi said, O Maharaj, whom you are calling my miracle is the love of Sri Krishna. And the people were surprised. When the king of Udupi took the wheel of his secret, he said, Sri Krishna used to eat peanuts every night. I used to keep peanuts in their camp every day, and after the dinner, I counted how many peanuts he had eaten. The next day, 1,000 times soldiers were killed in the war by the peanuts Krishna ate. That is, if they used to eat 50 peanuts, I would think that next day 50,000 demons were killed in the war. And I used this Krishna math. Interestingly, this is a very beautiful tale from Mahabharata, but the key point to take away from here is that Udupi, the king of Udupi, played a pivotal role in serving food to the soldiers in Mahabharata. Type E if you have enjoyed this narrative from Devdutt Patnaik. Type B if you are bored from this session. I would be happy to see E's and B's into the chat box. Excited that there are E's coming from Pushpanjali ji, Besuknath ji, Ramraj ji, Seema ji, Shakuntala ji, Garima ji, Vandana ji, Rekha ji, Rajesh ji, Surendra Kumar ji. Wonderful. You have been a lovely audience. Thank you for being so assertive and listening to me carefully in this interesting session. Well, we come back to the presentation which we were talking about, and we move on that what our food shastras talk about. There's an interesting chapter called Ogara. It talks about cooked rice, 9 types of paisa, and 24 types of bhat, pickle bhat, nimbu bhat, tamarind bhat, curd bhat, buttermilk bhat, and so and so. The book also talks about cooking of vegetables, 20 types of brinjals and cooking methods, processing of brinjal and wangi bhat. Now here comes another interesting point. Friends, when we talk about Indian food history, do you know that brinjal is considered to be one of the natives of India? So when we talk about traditional ethnic Indian vegetables, brinjal is one of them. So you must know what you eat, when you eat, and how to eat. Then there are leafy vegetables like tender bamboo, gooseberry, processing in jaggery, sugar, bitter gourd, radish, milk vada, patra vada, the use of asafoetida, garlic, onion. Though there are another interesting facets when we talk about using of asafoetida. Now, the great Indian cuisine has influences. Civilizations came, merged, changed, influenced, and so does the great Indian cuisine. During this long period, the cuisine of great nation India has gained from foreign influences. It is one of the tastiest cuisine, delicious cuisines in the world.
The Greeks, Romans, and Arabs, they introduced many herbs and spices, in particular saffron, and Arabs introduced coffee. The Zoroastrians brought with them the Parsi cuisine. Some believe that it was they who first brought biryani to India even before Mughals made it popular. Do you know that Mughals revolutionized the Indian food by their penchant of elegant dining and rich food with dry fruits and nuts, a style which eventually came to be known as Mughlai cuisine? Now, there is an interesting dish. I will come back to this slide again and let me take you to that interesting dish. There is an interesting dish. Do you know that today in Indian context, whenever a boy or a girl or a couple is married, when the newly wedded bride comes to home, there is a dinner or a meal hosted in her honor, and then ritually she also prepares a meal to the family and offers it as a part of culture. Type A if you agree to it. Let's see how many A's do we get from the audience. Pushpanjali KG, wonderful, wonderful, wonderful. Dr. Rekha ji, Shakuntala ji, wonderful, wonderful. Dr. Vandana Singh, wonderful. Now, even during Mughal Empire, when a new Begum used to come in her honor, there was a dish that was prepared for the new Begum. The dish contained all 6 rasas or tastes: sweet, sour, salty, bitter, pungent, and astringent. Can somebody tell me what is the name of that dish? Well, I'll put it into the chat box. The name of the dish is Mutanjan. Mutanjan is a very popular dish which was offered in honor of new Begum when she used to come to the palace. And this dish consisted of 6 rasas: sweet, sour, salty, bitter, pungent, and astringent. How interesting the food journey, the heritage of food of India is. Type Y if you say yes, the Indian food heritage is indeed interesting. Kuldeep ji, lovely, lovely. Pushpanjali ji, Rekha ji, Pratibha ji, wonderful. Let's come back to the presentation and move ahead. The Hindu refugees from Afghanistan brought with them a style of oven that is called as tandoori. So when people from Afghanistan moved, they came up with tandoor, and Indian food, what you call tandoori food these days, gained popularity. Britishers infected India with their taste of tea. They did introduce us with the knives and forks, and many cities' home dining table replaced the kitchen floor, though it is still customary in India to eat with your hands. Do you know that India is the largest tea producing country in the world? But before Britishers came, tea was not popularly consumed in India. Do you know that India is also the largest tea consuming country in the world? Tomato, chili, and potatoes, which are staple components in your kitchen at home or at any place. It was Portuguese who came with tomatoes, potatoes, and red chilies to India. There are a lot of culinary styles in India. In North Indian cuisine, tandoor, you prepare a lot of dals, yogurt, and marinades. I'm sure all of you must have heard about a dal called as dal makhani. Now, which Indian restaurant chain is considered to be the chain
used for popularizing or commercialization of dal makhani? The answer is Moti Mahal. Moti Mahal restaurant chain is known to be the chain which made dal makhani popularized at commercial level. So आप कभी मोती महल रेस्टोरेंट जाएं तो उनकी दाल मखनी जरूर खाएं. The best of Mughlai is characterized by its yogurt, fried onions, nuts, and saffrons. And there are tender kebabs, kormas, and pasandas which are there into Mughlai food. In traditional Kashmiri cooking, wazwan include table settings for group, where 4 people or more sit on floor with the dishes served together and eaten. So if you have a Kashmiri friend and if you get an opportunity to visit his wedding, don't forget to enjoy wazma, but ensure that wazma is a non-vegetarian preparation. If you are vegetarian, do inform them in advance. They'll take good care of you. Punjabis have reputation of being the great producers of food. Well, the frontier cuisine and the institution of dhaba has been promoted by Punjab. Punjabi cuisine include maa ki dal, sarson ka saag, makke ki roti, stuffed parathas, etc., etc. And थोड़ी नफासत से, थोड़ी नजाकत से जब हम बात करें तो बात करते हैं अवध के नवाबों की. So you have handi cuisine which is cooked on dum by the nawabs of Awadh, and you can have lot of Awadhi cuisines and dishes from the nawabs of Awadh. तो दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो M टाइप करें, बोर हो रहे हैं तो B टाइप. Fantastic. Vandana ji, Seema ji, Rajesh ji, so many M's, so many M's. ऐसे ही मजे लेते रहिए, आनंदित रहिए. जीवन आनंदित होने के लिए ही है. ओके, तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर आगे. मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन स्क्रीन आपके सामने आ गया है. Now, in South India, rice and dal are usually staple diet. They use lot of fermented food like dosas, idli, sambar. There are a lot of seafood which are eaten in the southern part of India. Kadi patta, commonly known as curry leaves, tamarind, and coconut are staple ingredients. In Hyderabad, Hyderabadi cuisine is inspired by Mughlai style, and most of the traditional dishes are biryani, korma, and sheer kurma. Karnataka has 2 major styles of cooking, that is Brahman cuisine, which is strictly vegetarian, and the cuisine of Coorg. Coorg की कॉफी भी बहुत पॉपुलर है और Coorg की pork dishes भी बहुत पॉपुलर है. Chettinadi cuisine of Tamil Nadu is hot and pungent with fresh ground masalas. Tamil Nadu is also known for its vegetarian Brahman cuisine, which is popular in India and overseas, including idli, dosa, vada, and uttapam. Kerala has appam, stews, ulli, tial, puttu, banana chips. Malabar Molipia cuisine is popular, which has an influence of Arab on it. So the dishes like alisha, which are cooked on hearty wheat and meat porridge. In central Kerala, the art of Syrian Christian cooking remains the pride for many homemakers. So in central Kerala, you will find people eating hoppers, roast duck, mean viva chattu, red fish curry, and stew. In east, when you go to Bengal, Odisha, you will find fish and rice are popular combos. Mustard oil is used extensively, and so is the masala called as panchpuran, which sets this cuisine apart from others. Odia cuisine is subtle and delicately spiced. Fish and other seafood such as crab, shrimp are popular. Panchputana, a mix of cumin, mustard, fennel, fenugreek, and kalonji are widely used. In Bengal, you use panchpuran. In Odia, you use panchputana. Well,
The food in the northeastern states such as Sikkim, Manipur, Meghalaya varies dramatically, and it has influence of Tibetan, Chinese, and even Western cuisine. And ladies and gentlemen, when you talk about Rajasthan and Gujarat, they offer you a variety of dals and dishes. However, Rajasthan cuisine is quite diverse, offering you an array of vegetarian and non-vegetarian delicacies. In case of Gujarat, the cuisine is primarily vegetarian except for the Bohra community of Gujarat, which are non-vegetarian. In a typical Gujarati thali, you will find savory vegetables prepared with aromatic spices accompanied by fried snacks. Khamman, dhokla, khandvi are popularly available in Gujarat. Farsans are given in abundance. You will find one more interesting thing in the cuisine of Gujarat, that is, in Gujarati cuisine, you will find salt and sugar added in almost every delicacy. सो गुजराती कढ़ी आप खाएंगे तो थोड़ी सी मीठी होगी, गुजराती दाल खाएंगे तो थोड़ी सी मीठी होगी, और यह बहुत सारे कारणों से ऐसा है क्योंकि वो आपकी ज्योग्राफी को भी डिपेंड करता है कि आप फूड कैसा ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात का क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है, आपको आवश्यकता है अपने शरीर को दुरुस्त रखने की, तो थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमक हर गुजराती के व्यंजन में मिलेगा ताकि आप दुरुस्त रहें। और जब आप राजस्थान हैं, जोधपुर में हैं, तो मेरे चटोरों, वहां की मिश्री लाल की लस्सी जरूर पिएं। जोधपुर में हैं तो मिर्ची वड़ा जरूर खाएं। अगर आप जोधपुर से जयपुर आ गए हैं तो घेवर जरूर खाएं। अगर आप उदयपुर पहुंच गए हैं तो मेवाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें। बात हो रही थी पारसीज की। बहुत सारी डिशेस पारसीज की नॉन वेजिटेरियन होती हैं। गोवन कुजीन पे भी काफी इम्पैक्ट है, लेकिन पारसीज की एक पॉपुलर डिश है जिसे कहते हैं धनसक, जिसमें कैरामलाइज्ड अनियंस और ब्राउन राइस सर्व किए जाते हैं दाल, वेजिटेबल्स और मीट के साथ। और जब बात गोवन कुजीन की हो तो चिली और हॉट स्पाइसेस का बेहतरीन कुजीन यहाँ है, जहां पर सिरका और नारियल बखूबी इस्तेमाल होता है, और आप जकुटी, विंडालू, सोरपोटेल, बहुत सारी डिशेस का आनंद ले सकते हैं। बात करें मालवानी या कोंकणी कुजीन की, तो कोंकण रीजन महाराष्ट्र, गोवा और वेस्टर्न कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में आता है। मालवानी फूड जहां एक तरफ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन डेलिकेसीज उसमें भी मिल जाती हैं। और आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं तो मेरे चटोरों, दाल और भात तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। किसी भी भोजन के जायके पूरे नहीं होते अगर आप उसमें मिठास ना जोड़े। तो आपकी वाणी में तो मिठास होनी ही चाहिए, लेकिन भोजन में भी मिठास जरूरी है। इंडियन स्वीट्स आर अ बिग अट्रैक्शन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अगर आप जगन्नाथ टेम्पल चले जाएं उड़ीसा में, तो आपको बहुत सारी मिठाइयां नजर आएंगी। हर मिठाई का एक अलग जायका है, बनाने का एक तरीका है, और खाने का एक भाव और चाव है, और विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट मिठाइयां बनती हैं, जैसे रसगुल्ला, चमचम, संदेश, लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली पश्चिमी बंगाल में पॉपुलर हैं। उत्तरी भारत में मोहनथाल, घेवर, मेसू गुजरात और राजस्थान में काफी पॉपुलर हैं। दक्षिण भारत में मिठाइयों का चलन थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे आप हरियाणा में खीर बनाकर खाते हैं, दक्षिण भारत में पायसम अक्सर बनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में जहां आप सूजी का हलवा बनाते हैं, आप उसी तरह से दक्षिण भारत में रवे का इस्तेमाल करते हैं और रवा केसरी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ मीठी मीठी बातें जायकों की। अगर यहां तक आपको मजा आया तो एम टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर आपको मजा नहीं आया तो बी टाइप कर दीजिए। वैसे तो लंच का समय नजदीक आ रहा है, थोड़े से तड़के मसालों के और लगाऊंगा ताकि आप आनंदित रहें
और इस सेशन से कुछ टेक अवेज के साथ फिर लंच में आप अच्छे से मंच कर पाए। मैडम शेफाली भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कह रही हैं कि ये चटोरा प्रोफेसर लाजवाब बातें करता है। तो मैडम माफ कीजिएगा, मेरा तो ये महकमा है, आई एम लाइसेंस्ड चटोरा। इंटरेस्टिंगली बजरंग लोहारू जी कहते हैं, सर मीठा मीठा खाना खाने को मन करने लगा। वाह बजरंग जी, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा सेशन सफलता पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो आज इस सेशन के 2 टेक अवे तो आप जरूर करेंगे कि आपने खाने की अच्छी अच्छी बातें तो जानी और सीखी ही। जिसने आज खाना बनाया है, चाहे वह आपकी माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, उनकी तारीफ जरूर करें और 6 रसों के बारे में सबको जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं इंडियन स्पाइसेस और डाइवर्सिटी की, और क्विकली फिर हम चलेंगे इंडियन फूड चेन्स की, जो कि बिजनेस में सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारे को जानना जरूरी है। हर्ब्स और स्पाइसेस का बहुत महत्व है किसी भी कुजीन और भोजन में। तो आप देखिए कि कड़ी पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, जावित्री, सौंफ, कितने सारे मसाले हैं जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट तो ये कहता है कि एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बहुत जरूरी है ये जानना और समझना कि इन स्पाइसेस को हम क्यूरेटिव और थेरेपेटिक फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज जहां आपको डाइटिशियंस कहते हैं कि आप गर्म पानी में जीरा डाल के पीजिए, आपका वेट कंट्रोल होगा, आयुर्वेद तो बहुत समय से कह रहा है अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हींग को जरा सा पानी से गीला कर ले, थोड़ा सा चिकना हाथ लगाए और अपने नेवल के समीप उसको आहिस्ता से लगा लें। याद कीजिए अपनी दादी और नानी के नुस्खे, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी। अगर आप इलायची खाते हैं तो दिल के लिए अच्छी है, मुख में तो सुगंध आएगी ही आएगी, दिल को भी दुरुस्त रखेगी। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा करना है तो दालचीनी भोजन में अवश्य खाएं। और नेचुरल एंटीसेप्टिक तो भारतीय भोजन में हल्दी है ही है। और कोविड टाइम्स में आप सबने ना जाने कितने काढ़े बना बना कर पिए, तो जिंजर और ये मसाले आपको कोल्ड और फ्लू से भी बचाते हैं। थोड़ी सी डाइवर्सिटी इंडियन कुजीन में नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में भी सबसेट्स में है। दिल्ली के कुजीन में ज्यादातर इन्फ्लुएंस मुगल एम्पायर की है, लेकिन चांदनी चौक की पराठे वाली गली के तो कहने ही क्या है। पंजाबी कुजीन की बात करें तो ढाबाज और पंजाब के देसी खाने का क्या महत्व है, यह बता दूं कि ढाबे या रेस्टोरेंट में पंजाब में पनीर जरूर मिलता है, लेकिन यह सभ्यता आज भी इंडस वैली से इंस्पायर्ड है। तो पंजाब और हरियाणा के गांव देहात में आज भी पनीर का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुजीन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसीज दोनों ही मिलती हैं। नवाबी फूड के तो कहने ही क्या है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर दाल, चावल, लेंटिल्स, एरोमास का इस्तेमाल होता है। टेमरिंड, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, पेपर, सिनामन, क्लव, कार्डमम, क्यूमिन, नटमैग, कोकोनट और रोज वाटर का प्रयोग भी बखूबी होता है। कर्नाटक में यद्यपि इडली, रवा इडली और मैसूर मसाला डोसा बहुत पॉपुलर है, लेकिन कर्नाटक की बहुत सारी डेलिकेसीज और भी हैं जो चटोरों को दूर दूर से खींच ले आती हैं। केरल कुजीन हिंदूज का तो वेजिटेरियन है, लेकिन मालाबार एरिया के अलावा केरल का साद्या और कंटेम्प्रेरी केरल कुजीन में 20 तरह की नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशंस आती हैं। राजस्थान का कुजीन मेवाड़ का अलग है, मारवाड़ का अलग है, राजपुताना अलग है। जहां एक तरफ आप खड खरगोश खाते हैं, वहीं घेवर या पंचकुटिया की सब्जी भी बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी कहानी भी है, पर समय की मर्यादा है तो उसे नहीं छेड़ूंगा। गुजरात के कुजीन में रोटला, दाल, ढोकली, कढ़ी, सब्जी, पापड़, छाछ का बखूबी इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्रियन कुजीन में साबूदाने की खिचड़ी, मसाला भात, पाव भाजी, मोदक, पूरन पोली और बटाटा वड़ा सर्व किए जाते हैं। बंगाल के कुजीन के तो कहने ही क्या है। लेया फूड्स, चौसा फूड्स चटनी और प्या के साथ खाए जाते हैं। और बिहार में तो लिट्टी चोखा, बैंगन का भाजा खूब आनंद के साथ लुत्फ उठाया जाता है। झारखंडी कुजीन में पिट्ठा, मालपुआ, दुस्का और एक लोकल एल्कोहलिक बेवरेज जिसे हंडिया भी कहते हैं, राइस की बियर के रूप में अवेलेबल है।
ओह, ये बात मैं छोड़ दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के ऊपर थी तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। चाय हिंदुस्तान की जो है वो एक बेहतरीन डिश है। ये रैंकिंग बदलती रहती है। लास्ट ईयर इंडिया नंबर 2 प्रोड्यूसर था, उससे पहले नंबर 1 था। इस साल की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन चाय हम सब के मन में उमंग जगाती है। और थोड़ा सा मौके की नजाकत और इन चटपटी बातों का जायका लेते हुए थोड़े से बात बॉलीवुड की ओर भी ले जाता हूं। आप सबने वो गाना तो सुना ही होगा कि शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो चाय पे बुलाने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक बात तो है, चाय लोगों को जोड़ती है। और अगर आप चाय को आज के कंटेक्स्ट में देखें, हम अक्सर ये कहते हैं, लेट्स मीट ओवर अ कप ऑफ टी। Interestingly, tea has become an essential element of all of our lives. अब थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर जाए तो देखिए कि आईटीसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आईटीसी होटल्स की, तो बहुत सारी इंडियन कलिनरी ट्रेडिशंस की जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरह से डाइनिंग विद महाराजाज एक पॉपुलर बुक है, जिसमें महाराजाज क्या खाते थे उसके ऊपर है। दास्तां दस्तर खान एक पॉपुलर बुक है, जिसमें नवाबों के खाने के ऊपर चर्चाएं की गई हैं। इसी तरह से एपिक चैनल पर एक शो आता है, राजा रसोई और अन्य कहानियां, तो उसको आप अगर देख सके तो जरूर देखिए। और भोजन पर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो मेरे चटोरों, आप सबसे बात करके मैं तो आनंदित, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। इतने सारे मैसेजेस चैट बॉक्स में हैं। कुलदीप जी टर्मरिक की बात कर रहे हैं, बेहसीना परिजात जी बटर चिकन की बात कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा कुलचा की बात कर रहे हैं, राजेश मौर्य राजस्थानी गट्टे की सब्जी की बात कर रहे हैं। वाओ, दैट इज ऑसम एंड अमेजिंग। इंटरेस्टिंगली, जब हम बात कर रहे थे किचन पॉलिटिक्स की, और हमने देवदत्त पटनायक जी के बहुत सारे पहलुओं और मसलों पर भी चर्चा की, तो मुझे ये लगता है कि आज के इस सेशन से आपको फूड को लेकर कुछ जरूर मिली होगी। दोस्तों, इंडिया वह महान राष्ट्र है जहां पर भोजन या हमारी संस्कृति ने हर तरह से अच्छी अच्छी चीजों का अपने अंदर समावेश कर लिया है। आज भी हिंदुस्तान में वेजिटेरियन खाना खाना सुपीरियर माना जाता है नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में, और ब्रॉडली खाने को राजसिक, तामसिक और सात्विक कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। बहुत सारे मेटल वेसल्स रिजर्व किए गए। अगर हम राजस्थान की रसोइयों की बात करें तो उनका भी कैटेगराइजेशन है, कांसा रसोड़ा, खासा रसोड़ा, ब्रिटिश या मॉडर्न रसोड़ा, और उन रसोइयों को उनके मेटल के इक्विपमेंट्स के हिसाब से बांटा गया है। इसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करती है, वहां पर आप किसी भी टेंपल में जाएं, फूड और प्रसाद आपको हर जगह कनेक्ट कर ही देता है। तो बहुत सारे मसले हमने फूड से रिलेटेड बातें, उनके जायके और उनके पॉलिटिक्स के टच किए। बात सेशन क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट का भी है, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आप खाने को हल्के में ना लीजिएगा। अगर खाने को आपने हल्के में लिया तो पेट और जायका तो खराब होगा ही होगा, बिजनेस बहुत खराब हो सकता है। मैं बात करना चाहता हूं उनकी, किनकी, जिन्होंने खाने के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने बिजनेस एम्पायर बनाए हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, आपके आसपास आपने कभी ना कभी हल्दीराम में जायका जरूर उठाया होगा। तो हल्दीराम एक इंडियन ओरिजिन फूड चेन है जो कि आज बिजनेस वॉल्यूम्स में जबरदस्त कर रही है। इसी तरह से बीकानेर वाला एक इंडियन ओरिजिन बिजनेस चेन है जो फूड के बिजनेस में बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरह से गुलाब वाला एक रोहतक बेस्ड
फूड चेन है जो कि फूड बिजनेस में बेहतरीन कर रही है। तो है ना, कितने सारे एग्जाम्पल्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जो फूड चेन्स बेहतरीन कर रही हैं। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय बात करें तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मैटर में आपके पास बहुत सारी चेन्स हैं, डोमिनोज, सबवे और मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स। तो जहां जहां मानव है वही भोजन और भोजन से जुड़ी हुई बातें हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी दादी एक बड़ी अच्छी बात कहती थी कि अगर परमात्मा पेट ना देता तो शायद हम किसी से भेंट भी ना करते और काम भी ना करते। सो इफ वी हैव टू वर्क एंड एक्सेल, stomach is one of the important functionaries which compels us to work and feed the stomach, the body and the soul indeed. So if you have enjoyed this session, type EEE into the chat box. If you are bored with this session, type BBB into the chat box. I don't mind at all receiving Bs. Your feedback will indeed help us to excel ahead and bring out changes in it. बजरंग जी लिखते हैं कि सर आपके व्याख्यान को सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपने देश के विभिन्न हिस्सों के सुप्रसिद्ध व्यंजनों को याद दिला दिया। बजरंग जी, क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन है, अगर फेस टू फेस होता तो शायद हम लाइव कुछ वहां बना के भी आनंदित होते। तो परमात्मा ने चाहा तो फिर मिलेंगे और कभी लाइव सेशन में रूबरू होंगे। कुलदीप जी लिखते हैं जंबो वड़ा पाव वंडरफुल, मंगल जी ई, प्रतिभा जी ई वंडरफुल वंडरफुल, दुर्गेश जी, सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर मंजीत जी, शकुंतला जी, भूपेंद्र जी, कुलदीप जी, रामराज नादर जी, पुष्पांजलि जी, सीमा गुप्ता जी। तो दोस्तों, आई एम सो डिलाइटेड टू मीट यू ऑल। नाउ देयर आर फ्यू मिनट्स लेफ्ट, यू कैन रेज सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। मुझे आपके साथ इस पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ इतने एक्टिव सेशन पार्टिसिपेशन में बहुत मजा आया और मैं ये समझता हूं कि ऐसे सत्र होते रहने चाहिए ताकि आप और हम एक दूसरे से मिलके सीखते रहें, जानते रहें। ऑलराइट सर, आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है और क्यों है? मेरा सबसे फेवरेट फूड कौन सा है और क्यों? दोस्त, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा एक फूड फेवरेट नहीं है। अगर आप मुझे कहें व्हाट मेक्स मी हैप्पी राउंड द ईयर, साउथ इंडियन फूड्स मेक मी हैप्पी। आई एम हैप्पी टू हैव डोसा, इडली, वड़ा एंड सांबर। लेकिन ऋतु अनुसार भोजन करना चाहिए। तो जब बात सर्दियों की हो तो मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है, बाजरे की रोटी पसंद है। अगर मैं राजस्थान की ओर रुख कर रखा हूं तो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। सर, ऐसा फूड बताइए जिसके साथ पूरा जीवन निर्वाह कर सकते हैं बिना कुछ और लिए। दुर्गेश जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा और इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। तो मैं अपना तो इसमें कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि आधुनिक भारत में जब इतने सारे व्यंजन हैं तो एक तक रुक पाना मुश्किल है। लेकिन कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार बादशाह सलामत को नजरबंद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि अब सल्तनत आप छोड़ दीजिए, मैं देखूंगा। और क्योंकि वो बादशाह रहे तो उनको ये चॉइस दी गई कि आपको एक अनाज जो है वो मिलेगा, आप जो चाहें वो ले लें। तो कहानी इस तरह से आगे बढ़ी। अब बादशाह सलामत ने फैसले तो बहुत बड़े बड़े लिए थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा बुरा वक्त भी उनके पास आ जाएगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलावा भेजा, लेकिन नए बादशाह से डरते हुए मंत्री समझ गया कि अगर तू गया तो तेरा सरकलम हो जाएगा। लेकिन अपने बादशाह के साथ उसकी लॉयल्टी भी थी। बादशाह की मनोदशा समझते हुए मंत्री ने उनके खानसामा को उनके पास भेज दिया। जब खानसामा बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने अपनी सवाल को रखा कि मुझे नजरबंद कर दिया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कोई एक अनाज आप चुन सकते हैं जो आप खा सके। तो एज खानसामा आप मुझे बताएं कि मुझे क्या ले लेना चाहिए। खानसामा ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, बादशाह सलामत, यदि बात सिर्फ एक ही अनाज की है तो आप चना चुन लीजिए। आप कहेंगे तो मैं उसकी नमकीन कढ़ी बना दूंगा,
आप कहेंगे तो मैं उसके बेसन के लड्डू बना दूंगा, आप कहेंगे तो मैं चने की रोटी भी बना दूंगा, आप कहेंगे तो मैं चने की दाल भी बना दूंगा। और इस तरह समझदारी से खानसामा ने नजरबंद बादशाह की ये समस्या दूर कर दी। तो दोस्तों, अगर आप चना अपने जीवन में खाएं तो आप नाना प्रकार के व्यंजन का आनंद उठा सकते हैं। उसका हलवा भी बन सकता है, रोटी भी बन सकती है, दाल भी बन सकती है, कढ़ी भी बन सकती है, और ना जाने कितने पकवान भी बन सकते हैं। तो मेरे चटोरों, मुझे लगता है कि कुलदीप जी तो कहते हैं मुंह में पानी आ गया। कुलदीप जी, बहुत समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि ये भोजन का समय है और आपके साथ साथ मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुर्गेश जी ने सवाल पूछा था तो मैं कुछ हद तक उसका जवाब दे पाया हूँ। सर थोड़ा एक मिनट आपके लेना चाहूंगा, जस्ट 1 मिनट सर जी। जैसे आपने किचन पॉलिटिक्स की बात कही, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एडिशन है सर कि जैसे जोधा अकबर मूवी मैंने देखी थी, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें मुगल बादशाह जो था वो नॉन वेज फूड ही जो है वो प्रेफर किया जाता था बेसिकली। लेकिन जब अकबर की मैरिज जोधा बाई से हुई तो उन्होंने जोधा बाई ने फर्स्ट टाइम इंडियन फूड यानी इंडियन शाकाहारी भोजन वेज फूड जो है बनाया और बादशाह को खिलाया, और वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने काफी सालों तक वेज फूड को ही प्रेफर करके उसको खाया। दुर्गेश जी, मैं आपकी इस बात के लिए आपकी तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन अगर हम फूड हिस्टोरियन से इस कंटेक्स्ट में बात करें तो फूड हिस्टोरियन इसका एक एसर्शन अलग देते हैं। नो डाउट डिनर पॉलिटिक्स या फूड पॉलिटिक्स मुगल एम्पायर में भी रही और इनफैक्ट हर सल्तनत में रही, लेकिन अकबर को जो महान कहा जाता है वो मैं इसे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया वाले ज्ञान से नहीं कनेक्ट करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अकबर वाकई महान था। हो सकता है वो इतना इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल रहा हो कि कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ने उनके शान में ऐसा कह दिया हो, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो जो दूसरे मुल्कों के हिस्टोरियन भी हैं वो भी अकबर को महान कहते हैं। अकबर ने एक तरह से उसको हम वे ऑफ लाइफ कहें या रिलीजन कहें, उसको भी चलाने का प्रयास किया। वो एक पावरफुल शासक था, अगर चाहता तो उसे कंपल्सिव भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा भी अकबर नामे में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि आप अपने पेट को कब्रगाह ना बनाएं, और खिचड़ी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक फेवरेट व्यंजन है, अकबर उसे लजीजा के नाम से जानते थे और अकबर का भी एक फेवरेट व्यंजन जो है वो खिचड़ी था। अनडाउटेडली अकबर ने डिसीजंस लिए और ये कहा कि उसका जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ है और वो यहाँ की तहजीब और संस्कृति को बखूबी अपने दिल में रखते हैं और जगह देते हैं। सो इंटरेस्टिंगली उन्होंने भी वेजिटेरियनिज्म को काफी हद तक बढ़ावा दिया और कुछ इंस्क्रिप्शंस में अकबर ने गाय के लिए बहुत नरमी और रिस्पेक्ट भी जो है वो दर्शाई है। सो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं आपकी तारीफ करता हूं। और अकबर के बहुत सारे डिसीजंस जो कि उनको महान कहलवाने के लिए हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते हैं, वाकई उन्होंने उस जमाने में बहुत कुछ करके दिखाया। पुष्पांजलि जी ने एक सवाल रेज किया है, सम पीपल कंसिडर ईटिंग अनियन एंड गार्लिक बैड, व्हाई? पुष्पांजलि जी, food is strictly a discretion of eaters. However, if you ask me as a professor of food, hospitality and tourism, though I am a Hindu and a vegetarian, my answer would be that no food is bad, provided it meets your appetite. However, ginger and your bulbous foods, they are pungent in nature. So many people don't like their smell, so they don't have it. That's a rational answer.
सो दोस्तों, और कोई सवाल? यस, दुर्गेश जी कहते हैं सर, तामसिक एंड जैन पीपल डू नॉट ईट ड्यू टू अदर रीजन। वेल, सात्विक, तामसिक और राजसिक, इससे 3 तरह से हम भोजन को बांटते हैं। सात्विक जो सत्व की ओर लेके जाता है, विच गिव्स यू एन एसेंस ऑफ फूड. So usually sattvic is considered to be a pious food, a food of rishi munis or the people, which leads to simplicity. तामसिक जो तमस की ओर लेके जाए, so it is considered to be the food of warriors. So you'll see that the soldiers and the people who are into wars and huntings have been offered tamasic food. राजसिक जो रजस की ओर लेके जाए, so a food which is offered to kings and emperors, giving them different choices so as to nourish their body in accordance with their profession. So here the food has been connected with profession. So that's how सात्विक, तामसिक and राजसिक foods are connected. इसी तरह से एक और कनेक्ट है फूड का, कच्चा एंड पक्का फूड, जिसे हम कच्चा या पक्का भोजन भी कहते हैं. You will see that now there are a lot of eateries and commercial food outlets which are available, but not much. But 2 or 3 decades back, whenever we used to travel, we always used to insist upon कि पक्का भोजन लेके जाए. So the one which is cooked thoroughly, पक्का से वहां तात्पर्य जाता था फ्राइड फूड्स की ओर. इसको हम थोड़ा सा अगर कल्चर से भी कनेक्ट कर ले, मैंने कहा ऋतु अनुकूल व्यवहार, ऋतु अनुकूल भोजन. So when there are rains, you will see gulgule, pude, pakode, sawali, fried foods come into picture. The idea is to rule out infections and microbes, and thus during the monsoon season we insist upon having fried foods. But the moment prior to monsoons in summers, we discrete fried foods. When we come to winters, Ayurveda insists that you should have food with ghee, food with richness. So you will see the best example is what you should eat. The safest option is you eat what your forefathers or grandmother used to eat. So that gives you a safest option in context of food. Interesting. राजेश जी ने सवाल पूछा कि महिलाओं की तुलना में जेंट्स ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं खाना, क्यों? राजेश जी, I would defer to agree to that statement. Commercially, if you ask, most of the males are chefs into hotels for the simple reason that initially females were hesitant to go to hotels to take profession of chef. सर इस पर रिसर्च हो चुकी है. So I'm sorry sir. सर इस पर yes राजेश जी, सर इस पर रिसर्च हो चुकी है सर. और जबकि महिलाएं सदियों से खाना बनाते आ रही हैं, लेकिन जब स्वादिष्ट खाने की बात होती है तो ये कंक्लूजन निकला कि जेंट्स जो होटल्स के बेस पर वो किया गया सर्वे, जेंट्स सबसे अच्छा खाना बनाते हैं. सर ऐसा क्यों? राजेश जी, that's only an empirical research if so has happened. अगर आप होटल्स में शेफ्स देखेंगे तो 10 में से 9 शेफ्स मेल है, सिर्फ एक ही फीमेल है. तो वहां पर क्योंकि डेमोग्राफिक डिवीजन ज्यादा है, तो आंसर बट ऑब्वियस आंसर आएगा दैट मेल्स मेक गुड फूड. बट इफ यू डू इट साइंटिफिकली, no, there is no gender discrimination when it comes to cooking or not cooking of food. If you do the same research in households and conduct an empirical research, so the results would be inverse. Females make better food. If you do it in hotels, since 9 out of 10 employees in kitchens are males, the results would be different. Otherwise, there is no logic behind. जी सर, जी सर. Thank you sir. Thank you, Rajesh ji. Any other questions? तो मुझे ऐसा लगता है आज इतना लजीज सेशन था. तो जैसे जब हम मास्टर शेफ देखते हैं या फिर कोई भी फूड वीडियोस देखते हैं तो फूड इंस्टिगेट हो जाती है ना, तो ऐसे ही आज हमारी हो गई है. चाहे सब लोग नाश्ता करके भरपेट करके बैठे थे, पर मुझे लगता है आज डबल खाएंगे सब.
And that too, whenever we will enter into the kitchen, तो हमें ये चीजें याद आएंगी कि कौन सी हमारी इंडियन ओरिजिन की थी और कैसे हम बनाते थे, या इसके कौन से ऑल्टरनेटिव हम लोगों के पास उस वक्त थे, जिनके सब्स्टिट्यूट्स हमने बाद में ढूंढे हैं, है ना, मिर्च जैसे। तो इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जिस खाने से हम जीवन मानते हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता, उसकी हेरिटेज नहीं पता होती। तो आपने इंडियन कुजीन्स और इंडियन हेरिटेज ऑफ फूड, ये जो आपने इतना सुंदर इस तरह का एक विवरण हमारे सामने रखा, ये जो डेलिब्रेशंस आपकी रही, इट वाज very delicious, it was very insightful, it was really wonderful to learn so many things which are essential for sparing your very valuable time and being with us today for this interesting session and a very wonderful session. Thank you, Ashish ji. Thank you for being the part of this. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मेरे चटोरों, मुझे लगता है आपने चटपटी बातें बहुत सुनी, अब चटपटे लंच का आनंद उठाएं और इसी तरह से यूजीसी एचआरडीसी में मैडम डॉक्टर शेफाली नागपाल के साथ जुड़े रहें, अच्छे अच्छे कोर्सेज करते रहें और आनंदित रहें। इसी के साथ राम राम। धन्यवाद जी, राम राम जी। देखिए कल्चरल इफेक्ट फूड का कितना होता है हम लोगों की लाइफ पे, एंड आई थिंक वी ऑल हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुडे। It's an excellent session, madam. It's included almost everything, every part of India's elements are included over there for food habits. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।